Namaste everyone. Welcome to the Cārvāka podcast. This is your host kushalmehra. So today's podcast is on a very specific subject. I will brief everyone about what we are going to discuss. So a few days ago, Rahul Gandhi, who is the president of the Congress party, or I don't know, they keep changing the presidents. So I've lost track of, I mean, he's the de facto president of the Congress party, no matter who the Congress party decides to be the president. He had made a tweet on October 2nd, 2023, and he wrote this in Hindi. He said, बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहाँ ओबीसी एससी और एसटी 84% हैं। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5%। लिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। ये राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था, और आज की पॉडकास्ट हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में करेंगे। इस पर थोड़ा चर्चा हो रही थी, मैं कुछ कमेंट्री कर रहा था, तो उतने में मेरी गुरु से बात हुई। और बिफोर एवरीबॉडी सेज, आई वांट टू स्टार्ट बाय ऑफिशियली कांग्रेचुलेटिंग गुरु, क्योंकि गुरु इसके पहले जब तक गुरु पॉडकास्ट पे आया था, बड़े समय के बाद आया, तो गुरु तभी तभी नेशनल स्पोक्स पर्सन नहीं था बीजेपी का, और गुरु की पीएचडी चालू थी तभी। सो फॉर पीपल हु डोंट नो about my guest today, because I have a listener base that is outside India also. For ladies and gentlemen, my guest today is the national spokesperson of the BJP. He's an assistant law professor at Patna University, and he's a PhD in constitutional law, Dr. Guru Prakash Paswan. Guru, thank you for coming. थैंक यू सो मच कुशल भाई। और मुझे ये कहने में 1% भी संदेह नहीं है, मैं आपके पॉडकास्ट पे आया, उसके परिणाम तो यार मेरी बैंड ना बजाए। नहीं, ये देखिए क्या होता है, अभ्यास की बात होती है और अवसर की बात होती है, अपॉर्चुनिटीज की बात होती है, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लान। अभी जिस विषय का आपने अपने पृष्ठभूमि में जिक्र भी किया कि भाई वॉइसेस कहाँ थे, and you very well remember one such incident happened. I was cancelled at LSR college because I belong to a certain ideological organization. So they did not take into account the community to which I belong, but because I belong to a certain ideological outfit, you will not allow me to speak. तो ये मानसिकता का विषय है। आपने अवसर दिया, आपने प्लेटफॉर्म दिया, इसके लिए एक्नॉलेजमेंट करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। Yeah, and can I just say this on the record? Guru has been a friend. I first met Guru in the Ideas India conclave. I think it was 2018 या 17 में मिले थे। गुरु कब मिले थे अब हम पहली बार? 17 में मिले थे, and we just got along instantly. I shout out to another common friend, Anurag Saxena, who introduced us. Anurag ने हमें मिलाया था, and since then Guru and I have always been in touch, and people know this. I rarely talk to people, and this podcast has kind of stayed away from politicians, but Guru and few others I'm always happy to speak with, because and also I want to clarify this: whatever comes out of my mouth are my views, and they should not be attributed to Guru Prakash Paswan. Guru is an individual, and he will be giving his point of view. But Guru, so let's start over here. ये जो जितनी आबादी उतना हक, ये जो शब्दावली है, आई मीन, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये शब्दावली उचित थी जो राहुल गांधी जी ने जिसका प्रयोग किया है? मैं थोड़ा विषयांतर होऊंगा, और आपने वो अपने मीटिंग की भी जिक्र की थी। कुशल, मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है, दैट हाउ relationships have an impact on our perspectives, how I have seen your perspective evolve on certain caste issues, evolve on certain issues with respect to representation and reservation over the course of our last 5, 6, 7 years of friendship. And I think that is an actual measurement of our intellectual growth and development. And that could be why I on certain positions I used to have very extreme views, but intellectually and mentally, when we grow, we sort of there is a shift, there is a change in our position and perspective over the time because of our experiences and our conversations on the basis of our relationships. Coming to your question, आज कुशल, आज important दिन है। जितनी आबादी उतना हक, ये नारा भारत की राजनीति में पहली बार मान्यवर कांशीराम जी लेकर के आए थे। जब उन्होंने DS4 की शुरुआत की थी, उनकी यात्रा भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पर हम लोग कभी और चर्चा करेंगे, कभी बात करेंगे। और किस प्रकार से राजनीति में हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड की हर रोज मौत होती है।
ऑन एन एवरीडे बेसिस हिपोक्रेसी और आपके जो आदर्श हैं आप उनसे हर रोज भटकते हैं। राहुल गांधी जी ने जितनी आबादी उतना हक ले लिया है, बट आज के एकेडमिक वर्ल्ड में उनको प्लेजरिज्म का शिकार होना पड़े। उन्होंने प्लेजराइज किया है। और आज के दिन भी जब मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि है, आज भी राहुल गांधी जी ने बेहतर नहीं समझा कि उनका नाम ले, उनको एक्नॉलेज करें, एक ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। खैर वो दूसरा विषय है। सो टुडे मिस्टर राहुल गांधी डिड प्रेसर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसमें राहुल गांधी हैड द ऑडेसिटी टू आस्क द मीडिया पर्सन्स प्रेजेंट इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप में से कितने ओबीसी हैं, आप में से कितने दलित हैं, आप में से कितने आदिवासी हैं। एंड टू ऑल आवर नॉलेज नो वन रेज देयर हैंड्स, क्योंकि मीडिया में आज भी कुछ विशेष वर्गों का कब्जा है। तो जहां तक रिप्रेजेंटेशन की बात है, जहां तक प्रतिनिधित्व की बात, वो आवश्यक है। उस पे एक कंसेंसस आई थिंक अक्रॉस द पॉलिटिकल क्लास है, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और आज भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां रिप्रेजेंटेशन की कमी है। एंड कुशल, आई से दिस एज अ स्पोक्सपर्सन ऑफ द रूलिंग पार्टी। ये कहने में मेरे मन में कोई भाव नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये प्रॉब्लम पिछले 10 साल की नहीं है, ये प्रॉब्लम पिछले 75 वर्षों की है। आई वुड लाइक टू गो बैक टू अम्बेडकर। On Ambedkar said, and it's very prophetic, it's so relevant even today. He said that on 26th of January 1950, the day we are going to officially adopt our constitution, we are going to enter into a life of contradictions. We will have equality in politics with the principle of one man, one vote, but we will have gross inequality in our social and economic life. तो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में वो इनइक्वालिटी आज भी है, और ये एक सर्वमान्य बात है, ये सर्वविदित बात है, इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं है। राजस्थान में कहीं भी किसी भी प्रदेश में आज भी ऐसी खबरें हमें सुनने में आती हैं जो बहुत ही पीड़ादायक है। कोई दलित समाज का व्यक्ति, कोई आदिवासी समाज का व्यक्ति जो अत्याचार एक बहुत ही अनइमेजिनेबल प्रोपोर्शंस पे वो सहता है, दैट इज डेफिनेटली कंडेमनेबल। बट द पॉइंट इज द पॉलिटिक्स अराउंड इट। और जितनी आबादी उतना हक, ये कांग्रेस पार्टी का फेलियर है, इंडी अलायंस का फेलियर है। दिस इज देयर तुरुप का इक्का, दिस इज द आखिरी दाव ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ये न्याय वाली बात तो उन्होंने 2018 में भी की थी कि हम न्याय स्कीम लेकर के आएंगे और सबके खातों में पैसे देंगे, वो प्लान फेल हुआ ना। अभी भी दिस प्लान इज डेस्टिन्ड टू फेल। आई सेड, आई वाज इन अ डिबेट बिफोर आई जॉइंड हियर, तो आई कोटेड मिस्टर राहुल गांधी। राहुल गांधी जी ने कहा था कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू द एंकर, इस पैनल में कितने ओबीसी हैं, कांग्रेस पार्टी ने किसको भेजा है, किसी ओबीसी को भेजा है, किसी दलित को भेजा है, किसी आदिवासी को भेजा है। एंड दिस इज द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंडसेट ऑफ द फ्यूडल कांग्रेस पार्टी। इंटरेस्टिंगली आज राहुल गांधी जी ने यह कहा कि हमारी 4 प्रदेशों में सरकार है, उन 4 प्रदेशों में से 3 प्रदेशों में हमारे मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं। अब देखिए, यही इनके दोहरे मापदंड है। There is a very good study that has come out. I'll share the link with you, Kushal. Nishant, who is a scholar from Tata Institute of Social Sciences, he has done a phenomenal, remarkable work. So he has analyzed the social profile of chief minister since 1952 to 2023. And Yeah, I have the screen ready. So, Guru, oh, tell me and I'll put it up. yeah, if you can please put it up for our viewers. Yeah, so I'll put it up for the viewers. Here you go. So, पहले शुरू करते हैं इससे. We can start with the party-wise caste composition of chief ministers in India, as everybody can see it on the screen. Audio listeners, I will read it for you later on, but let Guru explain it first. Yeah, so look at the Congress's hypocrisy. आज वो कह रहे हैं कि 4 में से 3 प्रदेशों में हमारे मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं। Till now, Congress party has appointed almost 250 chief ministers. Out of these 250 chief ministers, 191 chief ministers came from the upper caste. Point number 1. Point number 2. Bharatiya Janata Party or Jansanghh till now has appointed 68 chief ministers. Out of the 68 chief ministers, 21 chief ministers came from the OBC. So in terms of percentage, the Bharatiya Janata Party, in terms of chief ministership, has made 35% of its chief ministers from the OBC community. The Congress party that claims to be the Sabka party has made only 15%
50% of their total chief ministers from the OBC community. And this is not what I am saying. The report is right in front of you. Ye report, it's an excellent report. Hindustan Times political data, CPR, and Nishant, an excellent, brilliant scholar, has collated this data and has put it in front of us. So this is the reflection. This is the hypocrisy of the Congress party, and there are hundreds such examples. We cannot forget the way Congress treated Ambedkar. We cannot forget the way Congress treated Babu Jagjeevan Ram. आज जिनके नाम पे वो राजनीति करते हैं, वही बाबू जगजीवन राम को आपने अपमानित किया था. बाबू जगजीवन राम को कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी थी, कांग्रेस पर डेमोक्रेसी बनानी पड़ी थी. तो आपके मन में दलितों के लिए, आपके मन में आदिवासियों के लिए, आपके मन में ओबीसी के लिए कोई श्रद्धा, कोई प्रेम नहीं है. जब मुख्यमंत्री बनाना होता है, जब अध्यक्ष बनाना होता है, तब आपको वो लोग याद नहीं आते हैं. जब वोट लेना होता है, तब आपको वो लोग याद आते हैं. ये लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ स्थापित हो जाता है. कुशल, एक आखिरी बात. बिहार से इसकी चर्चा शुरू हुई, उत्तर प्रदेश से इसकी चर्चा शुरू हुई है. उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं वो अपर कास्ट के हैं, वो ओबीसी के नहीं हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी, बिहार में जो बीजेपी के प्रेसिडेंट और उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, वो ओबीसी समाज से आते हैं. तो किसकी कितनी कमिटमेंट है, किसकी कितनी संवेदनशीलता है, ये तो तथ्य सामने है. लोगों को तय करने दीजिए, और लोग तय कर रहे हैं. Kushal, I don't need to mention it here. You are very well aware of the fact. जब हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात होती है, हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी 35% रिप्रेजेंटेशन इज फ्रॉम द ओबीसी कम्युनिटी. 2014 में जब यूपीए की सरकार थी, जब वो चुनावों में जा रहे थे, तो आपको पता है उनके कैबिनेट में ओबीसी समाज के कितने कैबिनेट मंत्री थे? ओनली वन ओबीसी कैबिनेट मिनिस्टर थे. So the point behind all this fact, the point behind this argument is the real hypocrisy of the Congress party, जो हमें यहाँ समझने की आवश्यकता है. आप उनको वोट बैंक समझते हैं, लेकिन उनको थॉट बैंक नहीं समझते हैं. ये स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है. राजीव गांधी, आज राहुल गांधी जी बोलते हैं. राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने सदन के पटल पे ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ही हैज opposed the recommendation of Mandal Commission, saying that you have brought the country to the edge of caste wars. इंदिरा गांधी, मैं जातिवाद राजनीति नहीं करना चाहती हूँ. मानसिकता क्या है, क्वेश्चन हमें समझने की आवश्यकता है. What is the mindset? There was a Belchi massacre. Belchi is a place near Patna. तो Belchi massacre में there was a violence between OBC and Dalits were massacred. Indira Gandhi sensed a political opportunity. She came along with a couple of BBC journalists. She sat on an elephant and she waved like this. This waving politics, this symbolic politics, ये जो प्रतीकात्मक राजनीति है ना, और यही हुआ था हाथरस में भी. You would very well remember. हाथरस में भी भाई बहन जाते हैं. अभी बिहार में पटना से आधे घंटे दूर है खुसरूपुर. खुसरूपुर में, कुशल, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, खुसरूपुर में महादलित महिला, शी वाज पीड अपॉन, निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया गया था. नॉट अ सिंगल ट्वीट फ्रॉम ऑल दिस सामाजिक न्याय लीडर्स. तो फैक्ट में मैं बोलता हूं, और इन एवरी डिबेट आई से, हर एक डिबेट में मैं कहता हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी को खुली चुनौती देता हूं. What is your definition? What is your vision? What is your imagination of social justice? Look at Mr. Lalu Yadav. लालू यादव जी सामाजिक न्याय के पुरोधा, सामाजिक न्याय के मसीहा, गरीबों के मसीहा. जब बात आई सत्ता में साझेदारी की, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मेरा बेटा तेजस्वी यादव बनेगा. मंत्री कौन बनेगा? मेरा दूसरा बेटा तेज प्रताप यादव बनेगा. राज्यसभा कौन जाएगा? मेरी बेटी मीसा भारती जाएगी. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन बनेगा? मेरी बीवी राबड़ी देवी बनेगी. अरे ऐसे होता है क्या? सोशल जस्टिस का क्या मतलब है कि मेरा और मेरा परिवार, सामाजिक न्याय का यही आधार. ये नहीं होगा. दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. ऑन द अदर हैंड, यू लुक एट अस. आपको मैंने स्टेट प्रेसिडेंट का एग्जांपल दिया. वी हैव 85 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टुडे हु कम फ्रॉम ओबीसी कम्युनिटी. कांग्रेस की टोटल पार्लियामेंटेरियन जितने, उनसे कहीं ज्यादा है हमारे ओबीसी पार्लियामेंटेरियंस. पहली बार देश के राजनीतिक इतिहास में दलित समाज का कोई राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण बनते. पहली बार किसी दलित समाज के व्यक्ति को लोकसभा में अध्यक्ष बनाने का मौका मिलता है तो कांग्रेस पार्टी को लोग कहते हैं मीरा कुमार थी. मीरा कुमार नहीं थी.
It was GMC Bala Yogi during NDA 1 गवर्नमेंट अटल जी की सरकार में जो कि टीडीपी से संबंधित। तो ये तथ्य हैं। तथ्यों के आधार पे आपको बात करना होगा। और इतना छोड़िए आप, थोड़ा-सा you go back a little bit, when for the first time in the history of our country, a woman from tribal community was about to reach highest constitutional office in the country. क्या-क्या नहीं बोला गया था उनको? You would very well remember. Oh, she represents devilish mindset. शैतानी मानसिकता का प्रतीक है। उनके रंग रोगन चरित्र पे टिप्पणी की गई थी। कांग्रेस पार्टी के फ्लोर पे जो उनके लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, क्या कहा था उन्होंने? मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, राष्ट्रपत्नी। क्या क्या कहना चाहते हैं? और फिर बहुत कन्वीनियंटली कह देते हैं, अरे वो तो बंगाली में था, वो तो हिंदी में। अरे ऐसे होता है क्या? डेली बेसिस पे आप अपमानित करिए उनको। हर दिन आप सिर्फ और सिर्फ उनको फॉडर समझिए। नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। We definitely need more conversations. We definitely need more engagements. We definitely need more social diversity and representation. बार बार ये अटैक होता है कि न्यायपालिका में, जुडिशियरी में सोशल डाइवर्सिटी नहीं है। नहीं है, आई एग्री। अरे भाई, प्रयास किसने किया? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के माध्यम से सरकार का अपॉइंटमेंट में कुछ हस्तक्षेप हो, ये कोशिश किसने किया था? पहली बार। ऐसे नहीं। तो क्रक्स ऑफ द मैटर इज दिस कि इतने लंबे समय तक आपकी हिपोक्रेसी नहीं चलने वाली है। ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस का तुरुप का इक्का है। ये आखिरी दाव है और मैं दावे के साथ कहता हूं, उनकी दाल नहीं गलने वाली है। सॉरी, आई टुक अ लॉट ऑफ माय टाइम। थोड़ा Uh, मैं you know, no, 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 it's okay. That's why the podcast is supposed to be the way it is. I mean, I want to focus more on the other aspects of the data over here too, so that you know. But this is also a problem, Guru. Like the research also shows, dominant OBCs account for 62% of the OBC chief ministers so far, and they show how there are 14 Lingayat, 13 Yadav, Ahom and 9, Vokaligga 7, others are 19, Kurmi 7, Isai Vellalar 6, 13 Kirar, Ghanchi, Teli, Lod and Mali, and 12 others. अब why I'm sharing this numbers is, आपने जो बात कही ना कि उसमें भी एक रियल, जिसको ट्रू सोशल मोबिलिटी कहते हैं, अगर हमें वो रियल सेंस में सोशल मोबिलिटी लानी है, तो इवन ओबीसी कम्युनिटी हो गया, एससी कम्युनिटी हो गई, एसटी कम्युनिटी हो गई, उसमें भी हमें करना पड़ेगा। फिर लिखा हुआ है 14% ऑफ ऑल द सीएम्स कम फ्रॉम पॉलिटिकल डायनेस्टी। सो दिस इज ऑल्सो, आप ये देखो कि ओबीसीज में, एससी में और एसटी में कितने डायनेस्टी और नॉन डायनेस्टी से आए हैं। जैसे जनरल कैटेगरी में 41 डायनेस्टिक हैं, 290 नॉन डायनेस्टिक हैं। ओबीसी में 88 नॉन डायनेस्टिक हैं, 19 डायनेस्टिक हैं। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में 12 के 12 नॉन डायनेस्टिक हैं, विच इज सच अ ग्रेट थिंग टू सी। मगर शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में 13 नॉन डायनेस्टिक हैं, तो 8 डायनेस्टिक चीफ मिनिस्टर हैं। एंड सेवन देन यही मैं यही रिपोर्ट को कंटिन्यू कर रहा हूं। 71% of chief ministers in India have come from groups which are not OBC or SC/ST in overall by caste category, and the share of OBC chief ministers peaked around 2008-9 as per this data, and there is a big state-wise asymmetry between share of OBC population and OBC CMs. मतलब कुछ स्टेट्स में है, कुछ में नहीं है, and these are important figures that we need to talk about, and this is where true representation in that sense comes. And I'm glad that this research was done, and this research was shared with the country. But Guru, I'll have to discuss this. मत जितनी आबादी उतना हक का basic logic है proportionate representation. Now this is a very dangerous path also, and फिर मैं तो खुला कह रहा हूं ये, अगर कांग्रेस पार्टी कहती है जितनी आबादी उतना हक, तो अभी डिलिमिटेशन की चर्चा हो रही है, गुरु सबको पता है डिलिमिटेशन के ऊपर बहुत विस्तार में चर्चा हो रही है, तो जितनी आबादी उतना हक कहां तक? और क्या कांग्रेस पार्टी उनके खुद के प्रधानमंत्री माननीय श्री मनमोहन सिंह जी से एग्री नहीं करती है? क्योंकि माननीय श्री मनमोहन सिंह जी ने एक एग्जैक्ट स्टेटमेंट दी थी माइनॉरिटीज के ऊपर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये विषय के ऊपर बात भी की थी, और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था कि कि
ये जब चर्चा हुई थी, तो ये तो आर्टिकल बड़ा पुराना है, ये 2006 का टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, और मैं ये एग्जैक्ट कोट रीड करना चाहता हूँ। ये बेसिकली 52nd मीटिंग ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी, उधर हुई थी ये चर्चा। और वहां पे मतलब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने ये तो बड़ा ही क्लियर कट कहा था कि उनका कोट है कि कोट, वी विल हैव टू डिवाइस इनोवेटिव प्लान्स टू एंश्योर दैट माइनॉरिटीज particularly द मुस्लिम कम्युनिटी कहा गया यार, आई एम सो सॉरी, मेरा ये कंप्यूटर का ये हो गया गाइस, बट want to read this. Yeah, we will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim community, are empowered to share equitably the fruits of development. These must have the first claim of resources. And now, has the Congress party itself changed? Now, I had a huge problem with this statement when it was made in 2006 by the then Prime Minister Manmohan Singh ji. I have a huge problem with Rahul Gandhi making this Jitni Abadi Utna Haq. It is all good to say Jitni Abadi Utna Haq. Then my question is कि जितनी आबादी उतना हक, तो क्या फिर मनमोहन सिंह जी गलत है, और दूसरा तो फिर ठीक है, जितनी आबादी उतना हक, हिंदूज को ज्यादा हक मिलना चाहिए इस देश में, भारत में? मतलब क्या क्या बात करना चाहती है कांग्रेस कि वहां पे ये लॉजिक फेल हो जाता है? नहीं नहीं बिल्कुल ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है. वी ऑल ऑफ अस हैड प्रॉब्लम्स व्हेन मनमोहन सिंह सेड दैट इस देश के संसाधनों पे पहला हक देश के मुसलमानों का. And this is such a problematic thing. This is such an unconstitutional thing to say in a democracy. And Manmohan Singh, being a Oxbridge economist and like with illustrious economics and academic credentials, I think that was something which is deeply problematic. But at the same time, the real, I think that was the pinnacle of Congress appeasement. I think. कि आप इससे ज्यादा अपीसमेंट आप क्या ही करोगे अगर आप कह रहे हो कि देश के संसाधनों पे पहला हक देश के मुसलमानों का है. हैड यू सेड कि देश के संसाधनों पे पहला हक देश के गरीबों का है, देश के संसाधनों पे पहला हक देश के वंचितों का है, शोषितों का है, पीड़ितों का है, हाशिए पे जो खड़े उनका है, तो हमने भी स्वागत किया होता. बट ये दौर अलग था कुशल, वो एक अलग समय था, वो एक अलग वातावरण था. ये वही समय था जब आई थिंक इसी बयान के शायद एक आध साल आगे पीछे ही सलमान खुर्शीद ने कहा था कि बटला हाउस का एनकाउंटर हुआ था, उसमें सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आए थे. ये वही काल था जब दिग्विजय सिंह हिंदू आतंकवाद का भी नारा देते हैं. ये वही काल था जब पी चिदम्बरम गृह मंत्री रहते हुए एक ही अनलिशियस sort of monstrosity on Hindu organization in the name of Hindu terrorism. So that was a different era when the Congress party was indulging and playing politics with this politics of appeasement. But we have to understand that whenever आज तक जितनी आबादी उतना हक, ये किसी ना किसी समय शायद इसकी आवश्यकता होगी. बट द फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स बिटवीन जितनी आबादी उतना हक, आई थिंक अ लॉट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू इंटरप्रेट इट. कांशीराम जी का वो मंशा नहीं होगी, कांशीराम जी का वो मकसद नहीं होगा, बट जो कांग्रेस पार्टी की मंशा है, जो कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है, दैट इट गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल स्पिरिट एंड द फंडामेंटल ब्रेन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 14-15 ये राइट टू इक्वालिटी की बात करता है. धर्म के आधार पे नो डिस्क्रिमिनेशन शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज यू स्पीक, ऑन द बेसिस ऑफ योर कम्युनिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट और द प्लेस वेयर यू लिव. धर्म, क्षेत्र, जाति, आप क्या भाषा बोलते हैं, इस आधार पे किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. प्रश्न खड़े होंगे. समस्या यही है कि राहुल गांधी जी समझते नहीं है मुद्दे को. राहुल गांधी जी की वो इंटेलेक्चुअल डेप्थ ही नहीं है कि वो समझते हैं. अगर थोड़ी भी इंटेलेक्चुअल डेप्थ उनमें होती तो आज वो कांशीराम जी को एक्नॉलेज करते. बट कांग्रेस पार्टी सत्ता की प्राप्ति में इन द परसूट ऑफ पावर they've gone mindless. This morning there was a tweet from a gentleman who is the Pradesh secretary of the Youth Congress, an office bearer of the Congress party, glorifying the Hamas terrorist on Twitter. This the extent. और अभी तक उसको इनकार करते हुए, उसको डिसोन करते हुए कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं आया. क्यों भाई? मैं पूछना चाहता हूं आपसे. नहीं आएगा ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का वो अलग ही गेम चल रहा है अपीजमेंट का. और आज भी इस बात, या तो दे रियलाइज इट एंड दे कॉन्शियसली इंडल्ज इन इट, बट पॉलिटिकली, सोशली देयर ट्रू फेस इज नाउ एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया. यू रेज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि भाई डोमिनेंट ओबीसी, सो हाउ आई क्लासिफाई इट. देखो, ओबीसी एक होमोजेनस एंटिटी नहीं है.
कि भाई कुशल ओबीसी है या गुरु ओबीसी है। अरे भाई ओबीसी में 6,000 से ज्यादा तो जातियां हैं। देयर आर मोर देन 6,000 कास्ट टू कम विद इन द ओबीसी एंड ओबीसी एज द पॉलिटिकल कैपिटल इट ओनली गेन ट्रैक्शन इन 1990। 1990 के बाद मंडल पॉलिटिक्स के बाद ही एक ओबीसी भी पॉलिटिकल कैपिटल होता है। ये चर्चा शुरू हुई कि नहीं ओबीसी की भी हम राजनीति करेंगे और फिर वो मंडल मंदिर का एक नैरेटिव खड़ा होता है और मंडल represents a school of politics that spoke on the rights and the assertion of the OBC communities. We have to make a distinction, Kushal. OBC community historically, if we look at it, they're intermediaries. जैसे हमारे यहाँ भी जो स्थिति दलितों की है, जो स्थिति आदिवासी की है, वो स्थिति ओबीसी की नहीं है, ईबीसी की जरूर है। कर्पूरी ठाकुर, अगेन अ वेरी रेवोल्यूशनरी मैन, कुशल। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए हम लोगों को। I'll share some of his good भाषण with you. तो कर्पूरी ठाकुर comes from a नाई community, बार्बर, ठाकुर समाज से। हमारे यहाँ बिहार में ठाकुर बोलते हैं उनको, नाई को। तो when Karpuri becomes the chief minister, he is not a dominant OBC. I categorize it into two classes: dominant OBC, like you said, and another is dormant OBC, जिनको कई जगह EBCs बोलते हैं। और डोमिनेंट और डोरमेंट ओबीसीज के भी वर्गीकरण को समझने की आवश्यकता है। So when Karpuri Thakur ji becomes the chief minister of Bihar, you know what sort of slogans came? कर्पूरी, कर्पूरा, छोड़ कुर्सी, पकड़ अस्तूरा। पकड़ अस्तूरा क्यों? Because he comes from नाई community. आप कुर्सी छोड़ो और अस्तूरा पकड़ो और लोगों का बाल काटने का काम जो ट्रेडिशनल है आप वो शुरू करो। So दिस इज सो रिडिकुलस, मतलब ऐसे शब्द प्रयोग। this has been part of popular lexicon in Bihar. कर्पूरी, कर्पूरा, छोड़ कुर्सी, पकड़ अस्तूरा। तो ये सामंतवाद है। This is the level of feudalism which has come. So Karpuri Thakur, why I brought him in the discussion was ये डोमिनेंट ओबीसी और नॉन डोमिनेंट या डोरमेंट ओबीसी का जो वर्गीकरण है, कर्पूरी ठाकुर जी, ओ माय गॉड कुशल, व्हाट अ चीफ मिनिस्टर इन टर्म्स ऑफ पर्सनल इंटेग्रिटी। यशवंत सिन्हा, former finance minister, has written his autobiography and he recounts his experience because he was at some point in time serving as a personal secretary of Karpuri Thakur ji. So Karpuri Thakur ji का वो एक इंसिडेंट रिकाउंट करते हैं कि वो समस्तीपुर के रहने वाले थे। समस्तीपुर में एक गांव के रहने वाले थे। उस गांव का नाम फिर बाद में कर्पूरी ग्राम कर दिया गया। तो एज अ पर्सनल सेक्रेटरी, एज अ आईएएस ऑफिसर, ही गोज टू चीफ मिनिस्टर्स हाउस इन समस्तीपुर और वहां उन्होंने देखा कि चाय की व्यवस्था भी नहीं थी। कि चाय बनाना है तो कर्पूरी जी की वाइफ को दूध मंगवाना पड़ा, कोयला मंगवाना पड़ा, मिट्टी का चूल्हा मंगवाना पड़ा। ऐसे मुख्यमंत्री रहे। दूसरा एग्जाम्पल कर्पूरी जी की ईमानदारी का है। ये मैं सुन रहा था एक भाषण में। कर्पूरी जी कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने हरियाणा गए थे। तो कर्पूरी जी ने क्या किया कि उनके पास 2 ही 3 कुर्ते होते थे चुनाव के कैंपेन में। तो जो कुर्ते गंदे हो जाते थे, उस कुर्ते के ऊपर वो दूसरा कुर्ता पहन लेते थे। बोलेंगे अब इसको धोने का कहाँ समय है, वो 2 कुर्ता हम पहन लेंगे, फिर उससे अपना काम चल जाएगा। तो दिस लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंटेग्रिटी दैट मैन, he started Mungeri Lal Commission. Now, what is Mungeri Lal Commission? Mungeri Lal Commission is categorization of dominant OBCs and non-dominant OBCs. पिछड़े वर्ग में भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग. This distinction came in existence by Swargee Karpuri Thakur. And in a sense, you would have seen Justice Rohini Commission that has come into existence now, which was instituted by the present government. So Justice Rohini Commission is essentially accentuating the work which was initiated by Mungeri Lal Commission. तो इन 6000 जातियों में उनकी अभी रिपोर्ट 31 जुलाई को सबमिट हुई थी ना, जस्टिस रोहिणी कमीशन की। करेक्ट उनकी यहाँ रिपोर्ट। तो उस रिपोर्ट की विशेषता क्या है कि post 90, post Mandal, it was felt that this
OBC reservation is being cornered by some people and rightly so. एक यादव परिवार है समाजवादी पार्टी, एक यादव परिवार है राष्ट्रीय जनता दल, एक कुर्मी परिवार है, कुशवाहा परिवार है। कुछ ओबीसी के 6000 जातियों में कुछ 15-16 ही ऐसी जातियां थी जिन्होंने इस रिजर्वेशन के बेनिफिट को कॉर्नर किया है। उस रिजर्वेशन के बेनिफिट का विधिवत बंटवारा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। वो रिपोर्ट का रिकमेंडेशन आएगा, ओनली देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इट। सो मुंगेरी लाल कमीशन इन अ सेंस was envisioned to do this. तो जस्टिस जी रोहिणी कमीशन में आता है, so that is a definite conversation. Recently, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना. So what is PM विश्वकर्मा योजना? There are 18 categories. उस 18 कैटेगरी में कौन लोग हैं? शू मेकर, कारपेंटर, बार्बर, नाव बनाने वाले, मछली का जाल बनाने वाले. These are the same exactly non-dominant OBC communities. जिनके ऊपर ये तो आरोप है कि भाई आप आरक्षण लेते हो लेकिन उनको आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पाता है कुछ हिस्टोरिकल कारणों की वजह से, जिन कारणों का विश्लेषण जस्टिस रोहिणी कमीशन कर रही है। और यही कारण है, ये इनका अगला ट्रैप हो सकता है कि जब कास्ट सेंसस की आप बात करते हो तो कास्ट सेंसस के रिपोर्ट के आने के बाद ये जातियां आपके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी और ये बोलेंगी कि आपने ओबीसी के नाम पे राजनीति तो जरूर किया है लेकिन हमारे समाज का क्या? आपने क्या हमें प्रतिनिधित्व दिया? आपने क्या हमें मुख्यमंत्री बनाया? आपने क्या हमें मंत्री बनाया? आपने क्या हमें अध्यक्ष बनाया? मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कभी जातिगत जनगणना हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। When these political parties, प्रेसिडेंट कौन बना है, वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है, जनरल सेक्रेटरी कौन बना है, तो इसको समझना चाहिए हम लोगों को। ये जो हिपोक्रेसी है इनकी, ये देखना चाहिए। थर्ड कंपोनेंट ऑफ द क्वेश्चन वाज डायनेस्टिक पार्ट। ये डायनेस्टिक और परिवारवादी और वंशवादी जो शक्तियां हैं, ये कैसे मतलब एससीज में कम थे, ओबीसीज में ज्यादा था। एंड इफ माय रिसर्च इज अप्रोप्रिएट, एंड आई थिंक इट्स अप्रोप्रिएट, इन द हिस्ट्री ऑफ भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, no father son, no father daughter, no brother brother has ever become chief minister or prime minister. जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं कोई डायनेस्ट नहीं बना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर एसआर बोम्मई बनते हैं तो बसवराज बोम्मई का कोई कनेक्ट रहा होगा, लेकिन वो बीजेपी में नहीं थे। बीजेपी में रहा हो कोई व्यक्ति, कोई पिता पुत्र जो पार्टी का अध्यक्ष हो गया हो, नहीं हुआ है। कोई पिता पुत्र जो मुख्यमंत्री हो गया हो, नहीं हुआ है। कोई पिता पुत्र जो प्रधानमंत्री हो, नहीं हुआ है। So the non-dynasty, अगर हाँ आप में प्रतिभा है, if you have talent, if you have that penchant for hard work, आप मेहनत करो और आगे बढ़ाओ, किसने रोका है? But in the name of dynasty, you are entitled to a certain position in your party or in the government. That is not typical of us. So I think this report, in a sense, covers these aspects of non-dominant OBCs and dynasties within different castes, which is going to be a very interesting interplay when it actually comes out, and how caste census will come and bite these political parties, which I'm sure. When the non-dominant OBCs will ask Yeah, questions, in fact, just where are we? yeah, just to back you up, this was written by Bharat Bhushan. He's a Delhi-based journalist in the Deccan Herald. I just want to read the words of this journalist verbatim. Okay, uh, and I want to quote a section of the Deccan Herald article. The BJP, moreover, has a major weapon in its armory which could flatten opposition initiatives to consolidate the OBCs and the EBCs. That weapon is the report of the Justice G. Rohini Commission on subcategories within the OBCs. I'm just stating this as it has already been written in the mainstream media. Guru, you're not making anything up here. The Justice Rohini Commission's primary task was the same: to evolve criteria for the fair distribution of benefits among the OBCs. The report was submitted to the government on July 31st, and despite speculation, the Modi government did not announce implementation of its recommendations in the recently held special session of parliament. The premise that the benefits are not distributed fairly is based on the grounds that the reservation quota of 27% is far less than the proportion of OBCs in the population, about 41% according to the National Sample Survey, 52% according to the Mandal Commission, and in Bihar, 63% according to the latest caste survey. Further, there is widespread disbelief that of the more than 2,600 subcastes in the central list of the OBCs, just a handful of dominant OBCs have cornered the reservation benefits. The national level implementation of the Rohini Commission's recommendations by the center could take the wind out of the sails of the Mandal parties putting together state level caste coalitions. Delivering on reservations for the EBCs may become an electoral necessity for the
BJP, even if this means moving away from the consolidation of Hindus across caste lines. The opposition's caste reservation plank is only a promise so far. I read these things even though I know Guru is part of the BJP's. A Guru knows I don't hold my punches, and Guru, in spite of all of that, Guru still speaks with me because Guru knows I don't come with malice. I just state things the way they are. But Guru still, it is ye, proportional representation. Look, I have been on record supporting reservations for SC/STs, and I know the BJP doesn't agree with me and my stand of OBCs. So I just want to state it on the record that me saying I don't support OBC reservation doesn't mean the BJP doesn't support it. So Guru being a BJP representative doesn't change the reality. But I'm an individual, a citizen of India. I have my own views. By the way, I oppose EWS reservations also, which the BJP got, as an individual. The BJP supports it, that is fine. The BJP can do it, and it's all good. But I get very scared with this idea of proportionate representation, because हम कहाँ तक जाएंगे. अभी गुरु एक research paper आया था, India's emerging crisis of representation, by policy analyst Milan Vaishnav and Jamie Hinston. अभी ये कोई, these are no lovers of BJP. These are no lovers of BJP, by the way. ये लोग कोई प्रेम नहीं करते हैं. और ये फिर डिलिमिटेशन में क्या होगा. और ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, प्रिंट में आया था. आई वांट टू रीड अ बिट ऑफ दैट आल्सो. और मैं जानना चाहता हूँ कांग्रेस ये गेम कहाँ तक खेलना चाहती है. सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वांट टू रीड दिस बिट. According to the 2019 research paper, India's emerging crisis of representation, by policy analyst Minan Vaishnav and Jamie Hinston for the Carnegie Endowment for International Peace, Bihar and Uttar Pradesh alone would gain as many as 21 seats in total, while Tamil Nadu and Kerala taken together will lose 16 seats if the delimitation is carried out according to the 2031 census, the earliest scheduled after 2026. The paper further projected that if the strength of the Lok Sabha is increased after the exercise, according to the projected population figures, the lower house would have to have a strength of 848 to enable accurate representation according to the proportion to population principle. In such a scenario, Uttar Pradesh would have a whopping 143 Lok Sabha seats as opposed to present 80, while Kerala would still have to have the 20 seats that it has now. Now, there is a saying in English, Guru, careful what you wish for. Is all I can say. Careful what you wish for is my message. Secondly, there is a beautiful book, Guru, that was written by a great scholar, Nalin Mehta, called The New BJP. It is the greatest repository of data driven analysis, and Nalin shows how every single pinpoint accuracy ke sath the BJP actually represents every caste group across the country. Listen, I have never hidden that I vote for the BJP. I have even campaigned for BJP candidates. I don't hide it. मैं ओपनली मेरी पॉडकास्ट पे ये कहता हूं, मुझे शर्म नहीं आती है. And I, as a person who has worked with BJP कार्यकर्तास, I can vouch for this at a Maharashtra level, that वो वार्ड, वो मंडल, वो जिला की पोस्ट खाली रखी जाती है बीजेपी में जब तक उस जाति और उस सिंबल और उस रिप्रेजेंटेशन का बंदा नहीं आता है. ये एक बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं कह रहा. मैं बीजेपी को बथेरी गालियां देता हूं मेरी पॉडकास्ट पे, मगर जो फैक्ट है मैं फैक्ट कहूंगा. और गुरु इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, दैट्स व्हाई ही नोज आई एम अ फेयर गाय, दैट्स व्हाई ही कम्स एंड स्पीक्स विद मी. बट गुरु, ये जो ये गेम खेली जा रही है, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि पहले कुल्हाड़ी खरीद रहे हैं, फिर जाके किधर रख रहे हैं और फिर ड्राइव करके जाके उसके ऊपर जंप कर रहे हैं. I love listening to you. Otherwise you are a good listener, but मुझे लगता है कि with you I have become a good listener as well. And only a good listener can be a good speaker. एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है. मेरा भी ये मानना है. नहीं, but देखिए बहुत important है. और good that you, and Nalin's book is definitely a repository of our work and a data driven and a very logical set of argument that he has done. Kushal, we need to understand this. So अभी क्या हुआ है कि, and you know it better than I do, that internationally as well there are certain interests. बहुत सारे ऐसे interest हैं who are not comfortable with the rise of India, who are not comfortable to see the optics that came out during G20, who are not comfortable to see that India has emerged as a very relevant and consequential global power.
जॉर्ज सोरोस वाला पूरा किस्सा आपको पता है, that how he has sort of initiated and cultivated and funded many social sector agencies to prop up manufactured campaign against us. So पिछले 10 साल में क्या हुआ है, that be it the vaccine regime, you very well covered, spoke on how the propaganda of against Covaxin, against Covishield, and in favor of Pfizer vaccine. I think Vivek's movie has covered it sufficiently well as well. So the international interest and the domestic interest, which has been referred as breaking India forces by none other than Rajiv Ji in his book. तो ये breaking India forces के लिए ये ultimate war. This is the ultimate. And when I say breaking India forces, we have spoken about Dalit Muslim unity, we have spoken about CAA, NRC, and how caste becoming an international issue in California. Thankfully, it was vetoed out. You would have seen the SB 403 resolution caste, which will. Yeah, Gavin Newsom vetoed that. So we will sort of we can have a discussion on that. Requires a different level of discussion. तो ये international agencies, international बहुत सारे ऐसे interest हैं जो कि भारत के इस growth के साथ comfortable नहीं. And now they need someone. We saw when Rahul Gandhi went to London, when Rahul Gandhi goes to Cambridge, who are the people who was sitting with? He's sharing stage with, he's sharing his conversation, he's sharing his discussion with. So it's an all-out war. It's an ultimate war. 2024 is not like any other election. It is a war for survival and existence of these political parties. और यहाँ पे Congress party has gone against their own will. Congress party as a party, it's very difficult to comprehend that to the extent to which they have gone. Like I give you so many examples that from the past, Congress party has had a certain ideological position with respect to caste, but this time they are walking the talk. They want to project as if we are the, because to ask in a press conference, kitne OBC ho, kitne SC ho, kitne ST ho, I think this is not the Congress party. This is not the typical Congress party. कांग्रेस पार्टी इसे एक एक्सट्रीम सिचुएशन में लाकर के खड़ा करे और कांग्रेस पार्टी जानती है इस बात को. सो आई वाज इन अ डिबेट द अदर डे विद तहसीन सिंह के भाई सेक्रेटरीज नहीं है, ऑफिसर्स नहीं है, ओबीसी के नहीं है. मैंने कहा तहसीन यहां मत जाओ, फंस जाओगे. और तुम्हें पता नहीं, मतलब मेरा यही बॉडी ऑफ वर्क है. कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय की पैरोकारी कर रही है, इससे बड़ा झूठ इस पूरी शताब्दी का कुछ नहीं हो सकता. The biggest lie of the century is that Congress party stands for social justice. भाई कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी टाइम एंड अगेन कोट्स कि भाई कितने सेक्रेटरी हैं, कितने जॉइंट सेक्रेटरी हैं. कांग्रेस पार्टी की सरकार है 4 राज्यों में. उन चारों राज्यों में मैं दावे के साथ कहता हूँ, फैक्ट्स के साथ कहता हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उन चारों राज्यों में कितने सेक्रेटरी हैं एससी से, कितने सेक्रेटरी हैं एसटी से, ओबीसी से? एक भी नहीं. ऑफ ऑल दीज 4 स्टेट्स. तो ये उनको याद नहीं होता है. ये आपको याद नहीं है कि आपकी 4 प्रदेशों में सरकार है, आप वहां तो लागू करो. आप वहां लागू नहीं करोगे, मंत्री परिषद में हिस्सा नहीं दोगे, टॉप मोस्ट बॉडी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, वहां हिस्सा नहीं दोगे. आपका इतिहास ऐसा है. तो कांग्रेस पार्टी इज नॉट वेरी कंफर्टेबल टेकिंग दिस रूट. एंड दिस टाइम with all their might they have come to this. Someone like Jairam Ramesh, who are not very. The other day, this press conference video that came where Ragini Naik was seen explaining कि नहीं इसको manipulate कर देंगे, इस question को manipulate कर देंगे. अरे भाई, the same Sonia Gandhi in 2013 during the women reservation bill said कि अरे भाई पार्टियों को तो स्वतंत्रता है ना, पार्टियों को तो स्वतंत्रता है, आजादी है, आप ओबीसी महिलाओं को टिकट दो, आप एससी महिलाओं को टिकट दो. और फिर ठीक 6 साल बाद आपका व्यू बदल जाता है. So this is not going to work. International interests are heavily invested. Breaking India forces are not comfortable with the image of India. We are growing internationally on our initiative. The whole world is celebrating International Day of Yoga. International Year of Millets is being celebrated across the world. The fabulous G20 that has happened recently. PM Modi receiving top most civilian honors from more than 15 countries. ये लोगों को पचता नहीं है ना. एंड अगेन ये पचने वाली बात है. कांग्रेस पार्टी इतनी फ्यूडल है, कांग्रेस पार्टी इतनी सामंती मानसिकता की है कि उनको ये बात पचती नहीं है कि गरीब परिवार में जन्म लिया व्यक्ति, अति पिछड़ी जाति में जन्म लिया व्यक्ति आज देश का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री कैसे बन गया है. ये एक्सट्रीम है, बट आई कैन अश्योर यू कि इसका अंत होगा.
और इसका अंत कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत सुखद नहीं होगा। अब आप दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को महज वोट बैंक के रूप में फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। नाउ दे हैव अराइव्ड, एंड एज दैट सेइंग गोस कि दरवाजे में हमने टांग अड़ा दी है, अब दरवाजा बंद नहीं। और ये जितनी आबादी उतना हक वाले बिजनेस में एक और एंगल मैं लाना चाहता हूँ। सो भाई, जितनी आबादी उतना हक अगर करना है तो कैसे करेंगे? अभी फॉर एग्जांपल गुरु, ये हमारा जेंडर रेशियो इन इंडिया स्टेटिस्टा मैं सोर्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है? सो केरला में 974 है फॉर एग्जांपल, छत्तीसगढ़ में 958 है, हिमाचल में 950 है। मैं एंड द बॉटम मोस्ट स्टेट इज उत्तराखंड विद 844 women against men। और अभी विमेन्स रिजर्वेशन बिल आया, तो क्रेडिट टू द पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया, यूनानिमसली पास हुआ बोथ हाउसेज में, अदर देन टू डिसग्रेसफुल पॉलिटिशियंस, एंड आई डोंट माइंड कॉलिंग देम डिसग्रेसफुल। they are a disgrace on Indian democracy and they should be called what they are. Again, these are my words, not the words of Dr. Guru Prakash Paswan. I, as an individual citizen of India, call those people who oppose the women reservation bill disgraceful. But again, Congress wants to talk about this. I remember, there was this researcher Guru। ये मैं ना हमारी दोस्ती के पहले की भी बात कर रहा हूँ, मैं 2014-15 की बात कर रहा हूँ। मैं एक एड एजेंसी के ऑफिस में था, पता नहीं मेरे मित्र ने मुझे, ये किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो एक फार लेफ्ट प्रोग्रेसिव रिसर्चर थी जो कैसे औरतों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ा प्रताड़ित किया जा रहा है औरतों को, वो रिसर्च के लिए कर रही थी और उसने मुझसे कमेंट मांगा था। तो मैंने बोला था, डू यू नो देयर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, देयर इज ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया दैट व्हेन इट कम्स टू इट्स इंटरनल पोजीशंस इन द इनसाइड द पार्टी सर्कल, ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया एक्चुअली गिव्स रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन इंडिया। मैंने बोला, कैन यू गेस विच वन? तो वो नेचुरल फार लेफ्ट एक्टिविस्ट थी, रिसर्चर थी, उसने बोला, इट मस्ट बी द कांग्रेस। आई वाज लाइक, नो माय डियर फ्रेंड, इट इज द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस डज नॉट डू इट। And she refused to believe me. First of all, I was like, you should do your research, you are a researcher, right? You are asking for my comment, now go and do your research. Now अगर ऐसा है तो ये जो proportionate representation है अभी, इस तो हम क्या जेंडर सेक्स रेशियो के हिसाब से भी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, मतलब इट, हाउ मेनी Pandora's boxes are these people going to create? And why I always state my references is because I'm a creature of habit. I like to state my references because क्या होता है कि लोग बोलते हैं तुमने ये फिगर बना दिया, नहीं भैया मैंने तो स्टेटिस्टा को कोट किया, एंड नाउ आई वांट टू स्टर द हॉर्नेट्स नेस्ट कंप्लीटली, राइट? सो व्हाट इफ आई नाउ मेक इट जितनी आबादी उतना हक? नाउ सी, आई डोंट बिलीव इन एनी ऑफ दीज थिंग्स, आई एम अ फियर्स इंडिविजुअलिस्ट in my eyes. I'm a fierce individualist and I've always been, but then we need to ask this question. This is the statewide distribution of the Brahmin population in India. My question to the Congress is, so what, in Uttaranchal, if 40% are Brahmins, in Himachal 20% are Brahmins, in Uttar Pradesh 11%, Delhi 10, Maharashtra 10, Rajasthan it's between 8 to 10, Gujarat 9, West Bengal 8, Chhattisgarh 7, Andhra Pradesh 4 to 5, Karnataka 4, and Tamil Nadu 3%. Like, are they going to create something like this? Like, why are we even talking about these silly things? Look, social justice is a real issue. I have, like, nobody needs to tell me. I have been the first one in the forefront. In fact, one of, probably the only podcaster in India, cutting across ideological spectrums, that has done the maximum number of podcasts on the rights of Dalits and the way they are treated, whether it's calling Guru, whether it's calling Abhinav, whether it's calling Guru's co-author and many other Dalit voices, and giving them the umpteen space to say what they want to say, till the extent of getting angry at times, and Guru having to tell me ki bhai tu shant ho ja, tu itna kyun bhadakta hai, kind of a thing. But it bothers me that the Congress does this. मतलब कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना फर्क है गुरु, ऐसा क्यों है? नहीं नहीं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और नहीं, आई वेरी वेल, आई कैटेगोरिकली रिमेंबर दैट this podcast space again used to be a very exclusive space, but our Ravinder, the Dalit Mahila from Punjab, we called, and there are many such examples where we have taken some Yes. positioning with respect to social justice, and it is a matter of commitment for us. देखो, जब अंत्योदय की बात होती है कुशल की, अभी हम लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती, वो हमारी पार्टी का एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, और उनके जो दर्शन है, which again I think it's an important topic for us to consider and ponder upon, that the only
Indian thought that has come post independence कि भाई भारत का ओरिजिनल थॉट जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एकात्म मानववाद एकात्म मानव दर्शन का था that was given by उसके जनक पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे which is very less spoken about. So why I'm discussing this here is कि अंत्योदय क्या है? अंत्योदय, if you do a संधि विच्छेद of अंत्योदय, it's पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय, the person who is standing in at the last in the line. अब इस पर्सन की जाति क्या है, इस पर्सन का जेंडर क्या है, इस पर्सन की डोमिसाइल क्या है, ये पर्सन भाषा क्या बोलता है, अरे इससे क्या मतलब है भाई, इससे मतलब क्या है? ये एक सर्वविदित, इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट कि गरीबी हर कम्युनिटी में है. एंड अगेन दिस इंटरेस्टिंग डेटा हैज कम आउट, कुशल, दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन सी एंड डिस्कस कि an average household income of scheduled caste in Tamil Nadu is higher than an average household income of an upper caste in Bihar. ये इंटरेस्टिंग है. ये अपना है भाई, निशांत का ही एक प्रोजेक्ट है which has come out in Hindustan Times recently. If you look at Nishant's timeline, you would see this. So how things have changed. Fundamentally things have changed. But उसके साथ साथ भी ये जानबूझ करके ऐसे fault lines पे politics करना. This is not going to work anymore. Honorable Prime Minister said कि भाई उत्तर दक्षिण में आप भेद करना चाहते हैं. अगर जितनी आबादी उतना हक है, तब तो मुस्लिम समाज को सोचने की जरूरत है. तब मुस्लिम समाज के लिए आपने कहा, लाइक यू सेड, कि भाई सब संसाधन में पहला कैसे होगा. तो ये एक सोचने पे हमें मजबूर करता है. और an average Indian voter is much more intelligent than both of us combined, Kushal. वो ये देखता है, वो ये समझता है. He analyzes this hypocrisy and this is absolutely not going to work. Instead, what we should do is, which we have been doing as well, we have conversations. We have conversations कि मीडिया में दलित क्यों नहीं है, मूवीज में दलित क्यों नहीं है, बिजनेस में दलित क्यों नहीं है. आई रिमेंबर वन कॉन्वर्सेशन ऑन डिक्की, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, which we had. अनरिप्रेजेंटेड इंस्टीट्यूशंस में रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़े, ये एक मुद्दे का विषय है. इस पर बात होनी चाहिए, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं है. लेकिन समाज में ये मानसिकता खड़ा करना, हम वो की भावना पैदा करना, अस एंड देम की भावना पैदा करना, ये ठीक नहीं. This is something which is not good for our democracy. This goes against the spirit and the grain of our constitution. This goes against the imagination of the father of our constitution, the chairperson of the drafting committee, Professor Ambedkar, who advocated and focused on equality. So this is something which they have to rethink, or एक तो इसमें पुनर्विचार की आवश्यकता है. Yeah, and it hurts me. It hurts me because, for people like me who truly believe in this cause, truly believe in, you rightfully said, I changed as a human being. When I changed as a human being, when I started interacting with Dalit activists, I changed as a human being. यार मैंने तुम्हें प्राइवेटली कितनी बार कहा है कि हमारी एवरेज लैंग्वेज में कास्ट स्लर्स हैं. मुझे मालूम भी नहीं था ग्रोइंग अप कि ये कास्ट होती हैं. और बाद में जब मुझे मेरे दलित भाई और बहनों ने बताया कि भैया ये हमारी जात का नाम होता है, मेरे को कितना बुरा लगा. मुझे आज तक शर्म आती है, मैंने वो शब्दों का प्रयोग किया, आज तक मैं शर्मिंदा हूं उसके लिए. एज एन इंडिविजुअल मुझे बुरा लगता है कि मैंने ये सब शब्दावली का प्रयोग किया हुआ है ग्रोइंग अप. मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं. ये सब चीजों की लड़ाई करने के लिए मैंने कोई ये पॉडकास्ट किसके लिए शुरू की थी? मैंने ये पॉडकास्ट इसी चीजों के लिए शुरू की थी कि ये सब शब्द, इस सब विषयों के बारे में बात करेंगे. अगर आपको मुद्दे पर बात करनी है ना, आई एम ऑल फॉर इट. मगर ये जो लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं ना, इसके साथ मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेट होता है इन चीजों से. दे कांट पिन मी for being, an apologist for whatever the so-called Brahmanwad they keep calling it. I'm like, I am on record stating I want to nuke Jati Varna. I'm very clear about it in my views, and it hurts me when I see all these things happening around in our country, and we are just ruining our society. That's what hurts me. Nothing else hurts me more than my society being ruined. And like I said, careful what you wish for. But कुछ लोगों ने प्रश्न पूछे गुरु, वो भी पूछ लेते हैं और फिर we'll wrap it up. Now, somebody has asked a very interesting question. Somebody has said कि Rahul Gandhi ji says my family gives sacrifices, but then his family also did forced sterilizations.
Why don't people talk about that? Like, what about that? Why don't they talk about something like that? And another question, this is very important: how are jatis with less than 1% votes ever going to get their rights? They get bullied by other jatis, irrespective of whether they are Brahmins in a state or SC or STs in a state, in the right. And another very interesting thing, and Guru, this is something that we have discussed a lot. Punjab is one of the states in India, Guru, that has 32 or 33% Dalit representation and less than 3% land ownership. What are these people going to do there? Are they going to take the land from the Jats and give it to the Dalits? Are they going to do that? Like, why are they breaking the country? So what do you make of all these three things that No, I've asked? no. See, I think one question that has really touched me is that what about people whose votes are less than 1%? They obviously they don't need to worry about it. I think Bharatiya Janata Party is there. We are never going to speak of such language of polarization कि नहीं जो कम है उनकी चिंता नहीं करनी है, जो ज्यादा उनकी चिंता करनी है, ऐसा नहीं है. सबको सम्मान मिलेगा, सबको संरक्षण मिलेगा. तो इस प्रकार का कोई भाव अपने मन में मत रखिए. Forceful vasectomies, yes, that definitely should be spoken about. And I think that's a very intelligent observation by one of your listeners that we have forgotten about it. अघोषित आपातकाल है देश में, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी कहाँ है भाई? भाई इसी देश में जितनी गाली, जितने भद्दे से भद्दे शब्दावली का उपयोग एक सिटिंग प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है, ये इमरजेंसी में संभव है क्या? आप 1947 से लेकर के आज तक का आकलन करो. आजकल तो बहुत सारे वो एआई टूल्स आ गए हैं, वो डेटा बता देगा कि किस प्रधानमंत्री ने जितनी गालियाँ खाई हैं. एंड पीएम once said this that someone asked him this question कि आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? So he said it कि मैं डेली 1 केजी 2 केजी गाली खाता हूँ, उससे मुझे एनर्जी मिलती है. अब किसी आपातकाल में, किसी इमरजेंसी में हेड ऑफ द स्टेट को आप गाली देंगे, अब मतलब ये किस प्रकार से आप ये सेक्शन ऑफ द मीडिया और इंटेलिजेंसिया कहता है, मुझे समझ में नहीं आता है. वेस्टिक्टोमीज फोर्सफुल थे, इनवॉलंटरी थे. डेफिनेटली इट मस्ट बी स्पोकन अबाउट, रिटन अबाउट, डॉक्यूमेंट्रीज शुड बी मेड एंड कन्वर्सेशन शुड हैपन. निश्चित रूप से बात होनी चाहिए. वो असल आपातकाल था. In Punjab is definitely a worrying situation because Mazhabi Sikhs, Ravidasiyas, Amdasiyas. In fact, I was in. You are going to London tomorrow, if I can say publicly. So, yeah. So you should go to South Hall, and in South Hall, you would see a Ravidasiya Gurudwara, a Gurudwara dedicated to Guru Ravidas, who came from obviously marginalized section. And now again, that takes me to another vantage point to for which I take a very few seconds. अभी आपने देखा होगा कि सनातन पे भी आक्रमण हो रहा था इन द नेम ऑफ सोशल जस्टिस. कि भाई सनातन इज इक्वल टू कास्टिज्म, सनातन होगा तो सोशल जस्टिस नहीं होगा. आई आस्क्ड अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन. सनातन का आधार रामायण, रामायण के रचयिता वाल्मीकि, वाल्मीकि किस जाति के थे? महाभारत, वेद व्यास किस जाति के थे? अरे कहाँ जा रहे हो आप? फंस जाओगे. यहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है. कांवड़ यात्रा कौन करता है? छत्तीसगढ़ में एक समाज है, वो समाज अपने ऊपर राम राम का पूरा टैटू करवाता है. रामदसिया समाज. अरे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है जहां पे आप टिक नहीं पाओ. हाँ, निश्चित रूप से कुछ कमियां हैं और उन कमियों के ऊपर लगातार काम हुआ है. वो such a preposterous comparison was being made. Udhanidhi is an Ambedkar. Oh my God. भाई Ambedkar is someone who reveres Ramanujacharya. Ramanujacharya, a paragon of Sanatan Dharma. Ambedkar said, I revere Ramanujacharya. I consider him as a guru because he ex- accepted a Dalit as his guru. तो सिलेक्टिव अंबेडकर को कोट करके अंबेडकर बन जाते हैं लोग. तो मुद्दा ये नहीं है निश्चित रूप से. बट पंजाब का जो मुद्दा है दैट इज डेफिनेटली वरीसम. और वो जो फॉल्ट लाइंस है कि उसमें भी रविदासी और रामदसिया सिक्स को कैसे रिप्रेजेंटेशन मिले, इस पे डेफिनेटली आगे चर्चा करने की आवश्यकता और गुरु, एक और प्रश्न मुझे पूछना है. राहुल गांधी जी, जैसे आपने कहा था, सच अ I mean, such a cringy thing to do, to start asking reporters in a press conference what caste they are. तो भाई गुरु, एक मुझे एक बात याद आ गई. राहुल गांधी जी के खुद के पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके वाइस प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने ये आर्टिकल, अगेन मैं हमेशा आर्टिकल के साथ अपनी बात करता हूँ. ये राहुल गांधी इज अ जनेऊधारी हिंदू सेज कांग्रेस. दिस इज फ्रॉम 30th November 2017 आउटलुक. सो भाई, राहुल गांधी जी अगर जनेऊधारी ब्राह्मण है, भाई वो किस मुंह से ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं?
उनको सबसे पहले अपनी सीट खाली करे ना राहुल गांधी। नहीं, मैं तो बोल सकता हूँ, तुम मत बोलो, मैं तो बोलूंगा। नहीं मैं तो नहीं बोलूंगा भाई, ये क्वेश्चन मैं तो पूछने वाला हूँ। नहीं, मुझे मुझे चिंता तो इस बात की, अगर वायनाड डिलिमिटेशन के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाए तो राहुल गांधी जी कहाँ जाएंगे, ये भी तो ये दिस इज डेफिनेटली Yeah, इट्स that, इट्स एन एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन फॉर हिम, एक अस्तित्ववादी संकट खड़ा हो गया है उनके सामने कि अभी मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्या करूंगा। पूरा एक मशीनरी लगा हुआ है, अरे नहीं ये 4000 किलोमीटर की यात्रा की है, ये बदल गए हैं, इनका पर्सपेक्टिव परिवर्तन हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी एक हफ्ते पहले खड़गे जी, गहलोत जी, मैंने जी, राहुल गांधी ऑन रिकॉर्ड, आज इन्होंने कह दिया, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आज वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जा रही है, राजस्थान में कांग्रेस जा रही है। ओ माय गॉड, आई एम सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, मैं उल्टा बोल दिया। इतना नॉन सीरियस आदमी, कैसे आप इनको सोच सकते हो भाई कि भाई आप देश चलाएगा। देखिए ये हो गया, इनका आखिरी स्टंट है, बट मुझे नहीं लगता है कि इनकी दाल बहुत लंबे समय तक गलने yeah, it's sad, मुझे सिर्फ दुख होता है कि हमारा देश, we've come a long way, as a society, as a country, and it's not just Ambedkar, it has many people who have fought against this malaise of casteism in our society, whether it's Savarkar and his seven shackles. He clearly talks about the seven shackles of Hindu society, and many other, Jyotiba Phule, and many others who have fought against this malaise in our society, and from different sections of society. I remember Abhinav Prakash coming on my podcast, and he said, we should all also say so many reformists in India were from the Brahmin Samaj. Brahmin Samaj में भी काफी reformists आए थे और जिन्होंने ये काम किया था, दलित समाज से आए थे. But we should not look at them as Dalit reformists or Brahmin reformists. We should look at them as reformists who believed in reform. And it doesn't matter what caste you belong to if you believe in reform. But this is the last straw in the back of the Congress, and it just hurts me. But before we wrap it up, Guru, I will give you the last word. So आप बताएं, आपको क्या कहना है आखिर में before we wrap it up. नहीं नहीं, देखिए at some level I think in the course of last 9.5 10 years things have definitely undergone a tectonic shift, एक परिवर्तन तो हुआ है और परिवर्तन हर स्तर पे हुआ है। संजय बारू's book, forgetting the name, he has written about the elites of Delhi, how Delhi elites have sort of, they're losing, increasingly they're losing their relevance, and they're not only they're losing their relevance, but they're also losing their capacity to impact the narrative. And I think it's happened because of interventions like yourself, podcasts like yourself, the technological disruption that has happened. So in the coming time, आने वाले समय में विमर्श का विकेंद्रीकरण, democratization of discourse is something which is going to happen. आप उसको रोक नहीं सकते। टेक्नोलॉजी हैज डेफिनेटली डेमोक्रेटाइज थिंग्स, और ये चर्चा, ये विमर्श जो पहले बंद दरवाजों में हुआ करती थी, टेलीविजन स्टूडियोज में हुआ करती थी, वो आज खुले तौर पे ये बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही हैं। और किसने कितना दिया है, कौन कितना एकोमोडेटिव है, किसके एस्पिरेशंस को किसने एड्रेस किया है। अब ये दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है कुछ परिवारों में, कुछ लोगों में, कुछ घरों में। अब चीजें सिमट के नहीं रहने वाली हैं। आने वाला समय निश्चित रूप से बेहतर है, स्पेशली फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इक्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू। चीजें ऐसी होंगी, एंड विल सी मेनी things which could not, which were not imaginable before in the coming times with respect to diversity, equality, and inclusiveness with respect to India. Yeah, the book you're talking about, Guru, is India's Power Elite, Class, Caste, and a Cultural Revolution by Sanjay Baru. I read it. It's a fantastic book. Everybody go read that book and you will understand how this elite in India is whining and crying. And actually, it is all about that. They had a stranglehold on discourse, ladies and gentlemen. And then Modi happened. And that stranglehold on the discourse. I'll give you stories. I've worked in villages. I mean, Guru knows about it. I've worked in scheduled caste, scheduled tribe villages, like completely scheduled caste, scheduled tribe villages by passion. I work in slums. Even today, I go and work in the slums in Mumbai.
whenever I am there. Like I live here now 4 or 5 months, live there 6 7 months, so I'm constantly on the move. And till date I have my network in the, in the marginalized communities. And a significant listener base of this podcast is actually from the marginalized communities, because they know they have a true ally in me. And the way the discourse in India has changed, it is nothing that uh, the 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 reality is they had a stranglehold on what people were allowed to think. uh, uh, where they like a Dalit who speaks their language. Then suddenly an independent minded Dalit like Dr. Guru Prakash Paswan comes up and he says, hang on, all of you are full of shit. And then they're like, ये तो दिक्कत हो गई, ये कहां से आ गया बोलने वाला? Then another Dalit comes up, Abhinav Prakash. Then another, Prerna Tiruvai. Then another comes up, Ramabhadran comes up. Then another comes up. Then another comes up. And they say, hang on, we have a mind of our own. We'll decide for ourselves. Shut the hell up. Clear the space. The funniest shitty things that I hear in North America. Modi is a Brahmin. I'm like, how little do you know about Indian politics, you idiots? How little do you know about Indian politics, you morons? And I am saying this openly. You don't even know what Samaj Modi belongs to. What is Modi's story? These people will fight Narendra Modi on the oppression card. Best of luck. Seriously, best of luck to you guys. I mean, I just laugh at this as a political analyst and an observer. I laugh at the Congress. I listen to these people talking and I laugh at them. But Guru, as always, it is a pleasure talking to you. And can I just say this once again? To see you grow as a friend, in your political career, in your academic career, it gives me so much personal happiness. I wish you nothing but success. And ek din I want to see you in the most highest offices in India. And buddy, as always, thank you very much for coming and talking to me. No, thank you so much, Kushal, and we should definitely we look forward to more such conversations on these issues, Kushal. Thank you, grateful. Mhm. All right, guys. I'll wrap today's discussion. Please go and follow Guru Prakash Paswan on social media. I'll leave his Twitter handle in the description of the podcast. And as you guys know, this is a member driven podcast. So if you can support the Cārvāka podcast, please join the membership program. It doesn't matter where you go and become a member on Patreon or YouTube or on Fanmo. You can also, buy Cārvāka podcast merchandise, or if you want to just support the podcast in a non-financial way, just like this video, subscribe to the channel. If you're an audio listener, leave a rating. Listen, I will go on doing these kinds of discussions and these kinds of chats because I believe in the true upliftment of the backward classes of India, irrespective of their caste, irrespective of their religion. I am an ally of these people and I will always remain an ally. And this podcast is a heterodox podcast, which is why I talk about all sorts of things. One of the first few people in India to talk about the case of Pashmanda Muslims was also the Cārvāka podcast. Nobody else did. कोई बात नहीं करता था जब तक Cārvāka podcast ने नहीं की थी. So I'll leave you guys at that. Keep supporting this and thank you very much for listening in.